Hello everyone. So at last revision class है SBL का एक सैम्पल पेपर देखेंगे 100 मार्क्स का समझेंगे इसको कैसे अप्रोच करना है राइट। तो प्रोफेशनल लेवल में स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का चैलेंज लिखना नहीं होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का चैलेंज क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है उस पे ज्यादा होता है राइट। सो हियर वी विल फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि अंडरस्टैंड क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कितने दिन है? 15 दिन है। इंडस्ट्री अंडरस्टैंड करो, ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड करो, 15 डेज है, अच्छे से करो। ठीक है। एग्जाम के दिन, एग्जाम के टाइम पे आप जो आपको 15 दिन पहले दिया हुआ था वो इंफॉर्मेशन को रिविजिट करने पे कम फोकस करना, उसमें कम टाइम स्पेंड करना, क्योंकि 3.25 घंटे 3 hours and 15 minutes will finish up like this, right? So let's begin with the last class of our YouTube revision for ACCA's SBL paper. I am Janki Panchal, your faculty for the subject, powered by IIC Lakshya, and this is a 100-mark sample paper that we will be doing today. Let's start. ये एक ये एक सिनेरियो है जहाँ पे एक फूड पैकेजिंग कंपनी की बात हो रही है राइट। मैंने आपको आई थिंक पहले दिन ही बताया था कि मैं एविएशन इंडस्ट्री का कोई क्वेश्चन लेना नहीं चाहती हूँ। वे लास्ट टाइम की एग्जाम में हमारा ऑलरेडी एविएशन इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया था राइट। सो आई एम एटलीस्ट 50-60% श्योर कि उस पे तो कुछ नहीं आएगा। एंड आई डोंट नो व्हाई मैं थोड़ा सा और इंक्लाइंड हूँ कि फूड इंडस्ट्री पे कुछ आए राइट। सो maybe that's why I have picked up this question, which is on the name of fishnet. Okay, so there's this so पहले अपना रोल बता दूं। We are the senior finance manager of this company. Okay, and we are working for fishnet. So who am I? I am the senior, just a second, senior finance manager, रोल प्ले, सीनियर फाइनेंस मैनेजर। मतलब एक स्ट्रैटेजिक लेवल जॉब जिससे आपको कंपनी को इनपुट्स देने हैं जो कंपनी के ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पोजीशन के लिए वैल्यूएबल है राइट। Your role is to advise the directors on the confidential strategic matters, and you report to Jane Wills, who is the finance director. So you are reporting who is the finance director, right? आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी बनाती है फिश बेस्ड रेसिपीज, डिशेस। ओके, तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली दिस कंपनी इज मेकिंग रेडी कुक मील, कुक्ड मील, जो फ्रीज हो जाते हैं या फिर चिल हो जाते हैं। आपको जब खाना है तो आप बस उसको निकालो, माइक्रोवेव करो, हीट अप करो एंड खा लो। सो उसका पूरा इंग्रेडिएंट वगैरह ऑलरेडी बना हुआ है राइट। प्री कुक्ड मील्स इज समथिंग विच वी ऑल नो। अब तो काफी कॉमन हो गया है। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो ये चीजें काफी यूज होती है राइट, कि आप अपने बस वो रेडी टू ईट मील बाहर से ले लिया एंड खा लिया राइट। यहाँ पे हम फिश बेस्ड मील्स की बात कर रहे हैं राइट। ये चीजें 6 मंथ्स तक बिगड़ती नहीं है एंड यू कैन चिल देम एंड फ्रीज देम। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रोडक्ट है आप उसको चिलर या फ्रीजर में डाल सकते हो। फिशनेट्स operations are sited in Grasby, a traditional fishing port, right? So यहाँ जो फिशनेट जो ये कंपनी है ये ग्रसबी का पोर्ट यूज करती है, और फिशनेट के खुद के कोई भी वेसल्स, वेसल्स मतलब बोट्स नहीं है। सो जो भी लोकल सप्लायर्स हैं फिशेस के, वहां से ये कंपनी अपना फिश सोर्स करती है राइट। लोकल सप्लायर से फिश सोर्स करती है।
Fishnet's finished goods are delivered by rail or road to the distribution depot of large supermarket chains and independent wholesalers, right? So ये जो इनके ready meals हैं, ये सारे ही by road transport. Obviously, these are chillers and proper amenities and equipped vehicles हैं जो प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से होलसेलर्स के पास, सुपरमार्केट्स के पास, रिटेलर्स के पास दे देती है. Fishnet does not get involved in the retail activities, वो पूरा wholesale संभालती है. Your days are very varied with members of the board approaching for you to advise on wide range of strategic matters. So, because your position is a senior finance manager, आपके पास financial challenges board of the directors काफी लेके आते हैं. So your days are pretty challenging, right? मैंने ट्राई किया आपके लिए एक छोटा सा लेस एग्जिबिट वाला क्वेश्चन ढूंढने के लिए. सो मैंने ये निकाला. मैं आपको कल बता रही थी राइट कि ज्यादा एग्जिबिट होंगे, बट देन आई जस्ट केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन. मैं बोला छोटा एग्जिबिट जो एक्चुअल में एग्जाम्स में आता है तो वैसा वाला ही यूज करते हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट? सो यहाँ पे 3 एग्जिबिट्स हैं. वन इज द कंसल्टेंट्स रिपोर्ट, second is the email from the engineering director for NPD. NPD is new product development, okay? And third is an email from IT director and the notes using CRM upgrade, customer relationship management upgrade, right? So before going to the question, let's understand the complete scenario. अभी तक हमको क्या समझ में आया, मैं उसको भी वापस एक बार रिकैप कर देती हूँ. फिशनेट करके कंपनी है, रेडी मील्स बनाती है फिश बेस्ड, जो आप फ्रीजर में और चिलर में रख सकते हो, 6 महीने तक बिगड़ती नहीं है. इनके खुद के व्हीकल्स, सॉरी इनके खुद के वेसल्स नहीं है, इनके खुद के शिप्स नहीं है. तो जो फिश वो सोर्स कर रही है वो सप्लायर्स, लोकल सप्लायर्स से सोर्स करती है. ग्रसबी करके जो पॉट है उस पे से सोर्स, वहां से उनकी फिशेज आती है. जेन विल्स इज द फिनेंस डायरेक्टर and you are playing the role, I am playing the role, you are the playing the role here of a senior finance manager. एंड हमारी लाइफ काफ़ी बिजी है यहाँ पे क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है. 3 एग्जिबिट्स दिए हैं यहाँ पे, कंसल्टेंट्स रिपोर्ट, ईमेल फ्रॉम इंजीनियरिंग डायरेक्टर एंड एग्जिबिट फ्रॉम द आईटी डायरेक्टर. 100 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन पे बाद में आते, पहले एग्जिबिट समझ लेते क्योंकि एग्जाम में प्रीसीन पहले दिया होगा, राइट? अगर प्रीसीन ना दिया होता, अगर आप मेरा जून से पहले का कोई वीडियो उठा के देख लो तो मैं पहले क्वेश्चन देखती थी, बाद में आंसर देखती थी, राइट? लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले यू नो पहले क्वेश्चन देखती थी, बाद में व्हाट यू कॉल इट, द सिनेरियो. आई यूज्ड टू सी द सिनेरियो लेटर टू फिगर आउट कि कहाँ से कौन सा मैं रिलेट कर पाऊँ. लेकिन अब क्योंकि हमको प्री सीन मटेरियल दिया जाएगा तो आप वो हैबिट लगा दो कि आप पहले से क्वेश्चन देख लो और बाद में आप उसका, पहले से आप सिनेरियो देख लो, बाद में उसका क्वेश्चन देखो. ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज. ये सारे टास्क है, 100 मार्क का है तो उसके वैल्यू के टास्क है. द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम मार्केटिंग कंसल्टेंट्स रिपोर्ट, where the first thing is about the consumer market. So understanding के market में कौन players हैं, right? Competition क्या है ये company के लिए. The sea line retails market has got fish-based recipes, which is dominated by the 4 major supermarkets chain. Together represent about 80% of the sea line's retail market. There is the remaining sales coming from small wholesalers, right? So the इनका retail market, major supermarkets company के लिए कौन से हैं? ये सारे यहाँ पे 80%. सो जो भी फिश बेस्ड रेसिपीज बनाता है एंड बेचता है, सो उसका 80% ये लोग लेते हैं. डेस्को, वेटफेयर, सेलिसबरी, मैथसन्स एंड इंडिपेंडेंस, राइट? एंड इंडिपेंडेंस इज आई बिलीव द local suppliers, right? So these are your local local retailers, or small retailers, which is around 19 to 20%, right? So ये हमारा कस्टमर बेस है, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स भी देते हैं, राइट?
Customer market consists of two different types of segments. फिशनेट सुपरमार्केट्स एंड होलसेलर्स को बेचता है, वो खुद रिटेल नहीं करता है. Supermarket chain demands excellent service levels, faultless deliveries according to promise, and significant discounts. They also take between 90 to 120 days credit and sometimes pay much later than that. Right. So mostly हम supermarkets and wholesalers में बेचते हैं. 90 to 20 days का credit, 120 days का credit होता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्रेडिटर्स उससे भी ज्यादा टाइम लेते हैं. Suppliers are expected to deliver the regional distribution depots as often as 3 times per day and also buy prime shelf position in the stores, right? So, जो भी सुपरमार्केट्स में हमारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वहां पे आप प्राइम शेल्फ ले सकते हो, राइट, एंड उसका एक्स्ट्रा पे कर सकते हो. एंड बिकॉज आप एक पेरिशेबल गुड बना रहे हो, पेरिशेबल गुड सेल कर रहे हो, 3 times पर डे इसकी डिलीवरी होती है. While the wholesalers are much easier to deal with and often offer high margins, recent mergers have reduced the number of wholesale markets. Wholesale markets from 7 to 5, right? So normally देखिए, जो retailers की बात कर रहे हैं, supermarkets की बात करते हैं, तो supermarkets जो credit देते हैं, wholesalers and supermarkets को जो fishnet credit देता है, राइट, तो वो आइडियली 90 to 120, 3 to 4 months का होता है. लेकिन क्रेडिटर्स मतलब सुपरमार्केट्स एंड होलसेलर्स उसके भी लेटर डेज पे पे करते हैं, तो वो अपना क्रेडिट टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं. दूसरी बात, आपको 3 बार सप्लायर के यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिलीवर करने पड़ते हैं. थर्ड थिंग, अगर आपको प्राइम शेल्फ चाहिए तो आप वो परचेज कर सकते हो स्टोर्स में. होलसेलर्स के साथ ये सारी चीज़ें कम आती है, मार्जिन ज़्यादा रहता है, लेकिन फिलहाल मर्जर हो गए हैं होलसेलर्स के. लेट्स गो टू द इंडस्ट्री शेयर. इंडस्ट्री में फिशनेट की क्या पोजीशन है, राइट? Fishnet revenue has grown by 20% over the same period, but margins have fallen over year on year, right? So revenue increase हुआ है, लेकिन margin Fishnet का हो गया है कम. इनका शेयर बेस अगर देखें आप तो 2008 में 18 मिलियन था एंड 10 में 34 मिलियन है. दैट मीन्स फिशनेट का शेयर बेस इज ऑलमोस्ट डबल्ड इन 10 years. सो अगर मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी ने काफी ज्यादा मार्केट शेयर गेन किया हुआ है, राइट, बट ओवरऑल अगर परसेंटेज ऑफ शेयर इन द फिश बेस्ड रेसिपी देखें तो कंपनी ने इतना ज्यादा कुछ नहीं इंक्रीज किया हुआ है, राइट. मार्केट हैज इंक्रीज्ड टू डबल, right, but fishnet has got that percentage less. That means here we can see that fishnet is into trouble, right. Delight and Stenway merged in 2014, so ye dono, but their 2018 shares have been estimated for consistency. Let's see what else they have. Recent trends in the product. The main sales trend to emerge over the past 10 years are as follows: value owned brand and elite owned brand. These are the two brands that have been emerged. Value, the production of basic quality low price point, right? नेम ही आपको इनफ इंफॉर्मेशन देता है. जब एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो ज्यादा फैंसी नहीं होगा, वो ज्यादा वाव नहीं होगा, राइट, लेकिन जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है विच इज मिनिमम, उसके सामने वो उसकी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा. जब हम इलाइट की बात करते हैं, इलाइट, राइट, elite is something, as the name suggests, high quality, high price point, better recipes, better sales, right? So the main sales trends to emerge over the past 10 years is categorizing the brands into value brands and elite brands.
Low in, free from, public हो रही है conscious. Products with low or less salt, sugar, gluten, fat, and other ingredients, right? Where consumers' taste, fashion, or health concerns are taken into priority. Exotic fish varieties like snappers and cobia should be taken into the fish based products. Ethnic recipe dishes using from foreign cultures and cuisines such as Middle Eastern or Caribbean. Home cooking. More and more customers are now buying raw fish and creating their own dishes at home. This is possibly due to a high number of cookery programs on the Sealand TV. While this has had a significant impact on restaurants and cafes, it has also impacted on the recipe dishes, right? So, फिलहाल फिशनेट को ये सारे ट्रेंड्स अफेक्ट कर रहे होंगे. एक तो वैल्यू ब्रांड्स एंड इलाइट ब्रांड्स का कैटेगराइजेशन, less salt, sugar, yeah, health conscious products, exotic fishes, ethnic cuisines, and home cooking. Fishnet has never been particularly active in the own brand segment due to a desire to protect its brand name and reputation. As a result, other manufacturers satisfy most of the demand in this second sector. Indeed, Delight Stanway is 100% dedicated to producing own brand ranges for supermarket and does not itself have any recognizable brand name, right? Because Fishnet क्या करता है, जो वो products अपने supermarket से wholesalers को बेचता है, वो अपने brand से नहीं बेचता है, वो rebranding करके ये लोग अपना बेचते हैं. None of the Fishnet's products are explicitly labeled low or free from because maybe they'd never make those kind of recipes. Percentage of revenue from this range has also fallen before below 10% because now if people have become more conscious, तो वो लोग शायद they are looking for, they are eyeing for products which are free from, low calorie, etc. Fishnet does not provide any ethnic dishes also. So जो भी आजकल का ट्रेंड है फिशनेट इन ऑल उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं कर रही है. Supply chain. The Sealand fishing fleet has declined by 20% since 2000, mainly due to the imposition of catch quotas and competition from the large factory ships. Grusby now has less than 10% of the fleet side that operate from the port in the 1950s. अब क्या हो रहा है, सब अपनी खुद की प्राइवेट फिशिंग वेसल्स यूज करते हैं, राइट? एंड फिशलैंड की फिशिंग फ्लीट्स हैव डिक्लाइंड बाय 20% बिकॉज ऑफ द कोटास. नाउ एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फिशिंग कोटा, राइट? ये एक एनवायरमेंटल नेट है, ये आपको जानना जरूरी है. जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ फिशेस वाटर बॉडी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अंदर का जो फ्लोरा है, अंदर का जो मरीन लाइफ है, वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? विच इन रीसेंट decades people have, environmental groups have, enthusiastics, government, everyone has realized, right, कि एक minimum amount of marine life, aquatic life, fishes, corals, etc. has to be onto the water to keep that balance, right? इसलिए अगर आप यहाँ नोटिस करें तो फिशिंग कोटा इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन, कि अगर आपका एक वेसल है, अगर आपका एक शिप है जो जा रहा है पानी में, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिशेस ही एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन है, उसको फिशिंग कोटा बोलते हैं, राइट? बैक इन 2000s, बैक इन 1950s अगर कंपेयर करो तो तब ये सारा अवेयरनेस नहीं था, राइट? तब उतना एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं था. अब जब एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, अवेयरनेस बढ़ गया, तो सब वेसल्स जो भी पानी में जाती है फिशिंग करने के लिए, उनको एक कोटा मिलता है, उतना ही वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. The contribution factor is that factory ships are getting larger, making it harder for smaller fishing vessels to compete because they get the maximum fishing quota, forcing many of the smaller vessels out of the market. The increased proportion of factory ships is also putting pressure on the port facilities by Grusby. The current wharf will only accept about two-thirds of the factory ships visiting the East Coast, with the larger vessels offloading at Eastport.
Further down the coast, additional transport cost of having such fish bought from east port to road makes it impossible to maintain the margins, right? So अब क्या हो गया है, जो सारा फिश नेट का सिस्टम था वो थोड़ा सा हिल गया, बिकॉज फिशिंग कोटा आ गया है। ऑब्वियसली जिसने ज्यादा बिड किया होगा उनको बेटर फिशिंग कोटा मिला होगा। एंड बिडिंग ज्यादा कौन कर सकता है, जिनके बिगर वेसल्स हैं, राइट? सो जो लोकल सप्लायर्स या स्मॉलर शिप होल्डर्स थे, उनका मार्केट में एग्जिस्टेंस काफी ही कम हो गया, राइट? Eventually that led to companies not extracting a lot of fish which fishnet used, right? And that is where getting little and making it out is a challenge for fishnet. The logistical link for bringing other ingredients into fishnets are adequate for the current level of manufacturing activity, plus about 20% increase above this point. An upgrade of road and or rail links would be required. This is how the product portfolio looks for Fishnet. Bearing in mind that one of the 7 core values in Fishnet's mission statement is growth through innovation. So company का mission statement innovation पे based है. It is rather surprising that 85% of the revenue comes from the products that have remained essentially unchanged since 2013. Right? So product की age यहाँ पे 2013 से जो है वही है. Right? बाकी सारी चीजें is something which the product have enhanced in. While there have been new products in last 5 years, most of these have either been new versions of existing products, extension of existing products. It is the 11 years since Fishnet introduced its last completely new product line, the low calorie range branded skinny fish, perhaps due to the success of that product line, which won many innovation awards. Right? 20 years ago, Fishnet was regarded among the most innovative companies in the food industry, but they don't have that market anymore. Examination of the strategic plans produced over the past decade show a gradual reduction in the emphasis of new product development, replaced by an increasing focus on cost reduction in the production and logistics. If this were a deliberate shift from a generic strategy of differentiation to one of the cost leadership, it would be understandable. However, no such rationale can be seen in the strategic plans. Indeed, growth through innovation has been core value throughout the decade. The strategic drift seems to have had unintended impact of Fishnet's business model, right? So the company expected कि जो भी इनके पास है, right? Maybe in 2013 the skinny fish or the 1 decade ago wala innovation, right? They think this is going to back up them in the current scenario, right? But that is not happening. The company is facing a strategic drift. Strategic drift का क्या है? अब सिंस आया है तो मैं बता दूं। कंपनी का जो विजन होता है, कंपनी विजन करती है अपने आप को ग्रो करना ऐसे, राइट? स्लोली ग्रेजुअली एक स्टेडी ग्रोथ। लेकिन बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, कंपनी का जो एम है वो एट सर्टेन पॉइंट हिल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, राइट? अगर कंपनी ये टाइम पे रियलाइज करे एंड रिएक्ट करे तो दैट कैन गो अप, और अगर वो फेल हो जाए वो करने के लिए, देन देयर इज अ डिमाइस। सो यहाँ पे कंपनी, द क्वेश्चन इज सेइंग कंपनी समवेयर अराउंड हियर, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट फेज पे, राइट? और इसको यहाँ से ग्रो करना है। As a side note, we are aware both Cat Eyes and Red Run operate formal incentive programs for intrapreneurship. Entrepreneurship क्या होता है? Entrepreneurship is a situation where companies are going to have their own existing employees, making sure that they are innovating something for the organization. Okay, that is called intrapreneurship. Company अपने अंदर से ही entrepreneurs ढूंढती है. Conclusion, threshold, and core competencies. From discussion with stakeholders, the threshold competencies of this industry appear to be provision of excellent customer service levels, maintenance of high health and safety standards, established logistic systems, supply of branded and own brand lines.
right? So these are some things which can be the core competencies. From the analysis of Fishnet's performance and discussion with stakeholder, it has not been possible to confirm the existence of any core competency. As we can see, company ने कुछ नया नहीं किया है almost from a very long time, right? Skinny fish एक उनका अच्छा प्रोडक्ट था जो अभी भी वो लोग उस पर ब्रैग कर रहे हैं. इनोवेशन के लिए बहुत सालों पहले उनको कोई अवार्ड मिला था, लेकिन जो कंपनी का मिशन है, जो विजन है कि ग्रो करना है, इनोवेट करना है, वो ग्रोथ और इनोवेशन हमको एक्चुअल कंपनी की कैपेसिटीज में नहीं दिख रहा है यहाँ पे. Second exhibit talks about expected cost and revenues. Now, this is something that is given to the finance director from the engineering department. As you are aware, the CEO asked me to investigate the likely financial implications to have a formal new product development department. Rather than relying on our team of chefs to find new product lines alongside their routine work, I spoke to my colleagues, some suppliers of capital equipment, and to building contractors to create a department with 5 staff capable of working on 3 possible new products each year, and we would spend 1.5 million on purchasing capital equipment, converting an existing storage area into development kitchen, and this expenditure would be completed by the end of 2018. राइट. सो अब यहाँ पे सीईओ क्या बोल रहे हैं कि इनको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनपीडी की बात हो रही थी स्टार्टिंग में, राइट. सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, इसके लिए ये लोग 3 न्यू रेसिपीज, राइट, 3 पॉसिबल न्यू प्रोडक्ट्स रेसिपीज ये इनकी, राइट, इसको ये लोग एस्टैब्लिश करेंगे, उस पर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, और जो उनका एग्जिस्टिंग स्टोरेज है उसको ये लोग डेवलपमेंट किचन या फिर एक लाइक लैबोरेटरी के हिसाब से उसको नया शेप देंगे. Staff cost would be 300,000. For 5 additional staff required on the annual overhead would increase 200,000. This expenditure would start at the beginning of 2019. मगर अगर ये चीज इनकी सक्सेसफुल हुई तो नेक्स्ट ईयर से इनकी ये कॉस्टिंग हो जाने वाली है. If new product is a success, it will generate 700,000 in additional net revenue each year for 4 years. And the chances of success of an individual development would estimate about 25%. यहाँ पे इनके ग्रोथ लिखे हैं. My spreadsheet is attached. Let me know if you need anything else. So he's given a capital investment of 1,500, which is adding up obviously the 1.5 million. Additional staff जैसे उसने बताया 5 साल के लिए 300. Additional cost 200. Net cash flow that is expected is 725, 1050, etc. First year में कोई generation हो नहीं रहा है. Next year से if you see that is going to reduce, and eventually by the time company reaches 2023 there is going to be seen a profit of 33, that means 3.35 million, right. So ये एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन है जिसको इंजीनियरिंग डायरेक्टर ने पोर्ट्रे किया है टू द फाइनेंस डायरेक्टर. Third exhibit. Now this is also going to the finance director but from the IT department. CRM system upgrade, customer relationship. A full investment appraisal has been carried out by the finance function and has raised a concern about risk. The proposal requires final approval of the board before it can proceed, as the initial investment exceeds the $1 million delegated authority limit to the investment committee. This proposal was discussed at the most recent board meeting, and additional information was requested by the chair of the risk management committee. I understand that you have been asked to respond to the chair of risk management and would be obliged if you could copy me on your response. So IT director क्या बोल रहे हैं कि existing system उनकी fail क्यों हो रही है? First of all, creaking at the seams. While it is perfectly capable of recording and reporting to our direct relation with wholesale and retail customer, it cannot cope with the increasing volume of customers, right? जब company एक massive amount of production करके especially wholesalers and supermarkets में sell कर रही है, there are chances that बहुत ज़्यादा clientele है जो handle अभी company से नहीं हो रहा है. Supermarkets started to provide us with customer transaction data. They increasingly expect us to model consumer behavior. Supermarket expect us to analyze product sale data, advise and forecast on the demand.
Fishnet is responsible for advising the supermarket what to buy, right? And it is not only paid if the product sells. We are being made responsible for the cost impact of the product not selling also, right? So अगर मैं अपने products आपके supermarket में exhibit कर रही हूँ, तो मुझे डिसीजन लेना है कि मैं क्या एग्जिबिट करूं, क्या बिकेगा। नहीं बिका तो ये तो पेरिशेबल आइटम है, ये तो 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में, 6 महीने में, सॉरी, ये एक्सपायर हो जाएगा, राइट? सो ये चीजें सुपरमार्केट्स फिशनेट से एक्सपेक्ट करती कि वो बताएं कि प्रोडक्ट कौन से ज्यादा सेल हो रहे हैं, वो करे कंज्यूमर्स का एनालिसिस। While the current system contains a very basic data mining application, it cannot cope with the volume and variety of the data being provided. The storage capacity of the current system has been increased twice in the last 18 months, and another capacity increase will be required within 6 months. Proposed solution. The proposal is to acquire a series of applications from an established third-party developer. The IT department does not have the capability to design and program major applications, nor does it have the experience in developing cloud-based big data solutions. So the company wants to have a third party developer to help them कि वो उनको एक बिग डेटा या क्लाउड बेस्ड बिग डेटा बना के दें, क्योंकि कंपनी अभी एक स्मॉलर ग्राउंड पे वर्क करती है, तो शायद उनको उसका नॉलेज नहीं है, उनका एक्सपर्टीज वहां पे नहीं आएगा। व्हाट इज बिग डेटा? The proposed solution make use of big data analytics to identify trends, patterns, and relationships in it, consumer transaction data set. These analytical tools should allow CRM to improve the competitive position of Fishnet, as it is believed that none of the Fishnet's competitors uses this technology. Cloud storage and processing. The investment appraisal includes cash flows relating to small savings within the IT function. As we manage the CRM storage and application processing from our own hardware to the cloud, the solution provider's quote includes the cost of scalable and cloud solutions to be provided by highly regarded international cloud service providers. What is the recommendation? This proposal has the support of IT, marketing, and finance. It supports Fishnet's strategy, and the investment required is included in the 18 and 19 budget. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 36 marks का क्वेश्चन है। The board recently commissioned an independent marketing consultant to prepare a critical review on the Fishnet's market position and strategy. Extracts from the consultant's reports are attached. The finance director, on behalf of the board, has asked for your assistance. What are you required to do here? Evaluate the sources of competition in the fish based recipe dish manufacturing, right? कंपनी यहाँ पे कंपटीशन देख रही है, राइट ना। मैं इसको जो अप्रोच से हैंडल करूंगी इज द कीवर्ड कंपटीशन। कोई है मॉडल जो हम कंपटीशन के लिए यूज करते हैं या एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं जिसमें कंपटीशन आता है? पोर्टर्स बाय फोर्सेस, राइट। अगर हम ये क्वेश्चन पढ़े जिसका फर्स्ट एग्जिबिट अगर अपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें बार्गेनिंग पावर of supplier, bargaining power of buyer, rivals, new entrant, right? हम सॉरी हम ये सारी चीजों पे बात कर सकते हैं, राइट? सो अगर मुझे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखना है, सी मैंने कल भी बोला था कि हम ये 3 मार्क्स को, इसको टोटल हम 13 नहीं समझ सकते। हमको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन का आंसर देना है, और 3 मार्क्स अगर 10 मार्क्स का होगा तो इसके साथ साथ चलेंगे ये 3 मार्क्स, बिकॉज दिस इज अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर इवैल्यूएशन स्किल। आप कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो सिचुएशन को, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो हमको वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर लिखना है।
मैं पोर्टर से ही शुरू करूंगी बिकॉज कंपटीशन मेरा कीवर्ड है यहाँ पे। जब हमने लक्षा के क्लासेस लिए थे तो मैंने वहाँ पे कीवर्ड्स बताए थे। ओके, अगर ये वर्ड्स आपके क्वेश्चन में है तो ये वाला आप मॉडल यूज करो, क्योंकि टेक्निकली सारे मॉडल्स जब आप यूज करने की कोशिश करते हो तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? आपको याद नहीं रहते इतने मॉडल्स, इसलिए मॉडल से अटैच्ड कीवर्ड्स यूज करना बहुत ज्यादा, या फिर उनको रिमेम्बर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? यहाँ पे मेरा कीवर्ड है कंपटीशन, एंड कंपटीशन इज समथिंग विच इज एक्सटर्नल, सो मैं यहाँ पे अपना पोर्टर्स 5 फोर्स यूज करूंगी। 10 मार्क्स का है, 5 पोर्टर्स 5 फोर्सेस के फोर्सेस हैं, दो 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 मार्क्स अगर मैं अच्छे से उसको जस्टिफाई कर पाऊँ देन इट इज अ गुड अप्रोच, राइट? सो फर्स्ट कंपटीशन के लिए जैसे एक लिटिल इंट्रो मारेंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन रिपोर्ट है, राइट? तो सबसे पहले तो आप रिपोर्ट का फॉर्मेट, मैंने कल ही बताया था, रिपोर्ट या सारे फॉर्मेट्स आपको आने चाहिए, राइट? तो उसमें एक टू आता है, एक प्रॉम आता है, सब्जेक्ट आता है, राइट? और उसके बाद एक इंट्रो आता है। इंट्रोडक्शन में हम कंपटीशन के बारे में जेनेरिक टॉक करेंगे, राइट? कि भाई कंपनी का कंपटीशन है क्या, राइट? एंड देन वॉट एवर मॉडल आई एम यूजिंग वो मेरे बॉडी में जाएगा, आंसर की बॉडी में जाएगा, राइट? सो सबसे पहले अपन बात करते हैं राइवल्स की, राइट? सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंपनी के लिए 4 राइवल्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जो बार चार्ट देखा था उसमें इम्पोर्ट अदर, स्टैनवे, डिलाइट, रेडरन और कैट्साई, राइट? सो ये 4 राइवल्स है, इंडस्ट्री 4 कंपनीज में बटी हुई है, राइट? सो देयर आर 4 राइवल्स, सो ये हम बात कर सकते हैं, राइट? ओवरऑल 100% इंक्रीज इन 10 years, बट ये इंक्रीज क्यों होता है? मोस्टली इसलिए होता है, एक तो इन्फ्लेशन आता है इसमें, राइट? हमको ये कंट्री का इन्फ्लेशन मालूम नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्रीज इन्फ्लेशन, फॉर अ कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट? सो अगर ये 100% ग्रोथ है, जैसे हमने देखा कि 18 मिलियन से 34 मिलियन हो गया, ऑलमोस्ट 100% है, राइट? अ पार्ट ऑफ इट, अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन, राइट? एंड एंट्री एंड एग्जिट पे बैरियर्स आर हाई, राइट? क्यों? क्योंकि फिश इंडस्ट्री है, गेटिंग इनटू द बिजनेस, पूरा प्लांट वगैरह सब बनाने के लिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हमने देखा जब इंजीनियरिंग डायरेक्टर को रेसिपीज बनानी है तो भी उनको कहीं ना कहीं 1.5 मिलियन का एक्सपेंस हो रहा था, राइट? दैट मीन्स गेटिंग इनटू दिस मार्केट वुड नीड मोर कैपिटल, राइट? सो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे राइवलरी हाई है बिकॉज ऑलरेडी आपके पास 4 राइवल्स हैं, राइट? जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एंट्री एंड एग्जिट डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग राइवल्स है वो काफी फियर्सफुल है, राइट? आई शो यू अगेन। देखिए, स्टैनवे और डिलाइट हैड रिसेंटली मर्ज्ड आल्सो, राइट? सो अगर हम स्टैनवे और डिलाइट की बात करें, ये है और ये है, राइट? फिशनेट की बात करें तो यस, फिशनेट की ग्रोथ इनफैक्ट कम हो गई है, एंड हमको रीजन पता है फिशनेट की ग्रोथ क्यों कम है, राइट? कैट्स आई मोर और लेस सेम परसेंटेज पे है, एंड रेड रन भी मोर और लेस सेम परसेंट में। तो इफ यू नोटिस सारे मोर और लेस सेम परसेंटेज पे है, बट जो फिशनेट की ग्रोथ है वो इम्पोर्ट्स से टेक ओवर हो चुकी है अभी, राइट? सो द सेम थिंग इज व्हाट वी आर सेइंग हियर, द राइवलरी इज हाई बिकॉज द competition is fierce, right? Companies are merging, making it difficult for the other players to exist in the market, right? Let's go to the next one. Bargaining power of supplier, राइट? जब आप सप्लायर की बात करते हैं, यहाँ पे अगर पता है तो फिश, जो फिशनेट फिश लेता है वो लोकल सप्लायर से लेता है, जिनके लिए अब वहां पे एग्जिस्ट करना डिफिकल्ट हो गया है। फिशिंग कोटा की बात करी थी मैंने, याद है तो, राइट? सो उसके वजह से सप्लायर्स हो गए हैं कम, राइट? एंड दैट इज वाई सप्लायर का बार्गेनिंग पावर
supplier has reduced, and bargaining power of supplier has increased, right? पहले suppose 10 लोग 10 companies, if 10 companies used to have fishing vessels, then आपके पास 10 options थे. अब फिशिंग कोटा और बड़ी कंपनीज की वजह से अगर सिर्फ 3 ही है, तो मतलब बार्गेनिंग पावर फिशनेट का कम और सप्लायर का ज्यादा हो जाता है, राइट? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर. 2 मार्क्स के पॉइंट लिखने, बहुत ज्यादा इलेबोरेट मत करना क्योंकि टाइम फिर कम पड़ जाएगा. कस्टमर को क्या चाहिए? इनके कस्टमर्स पहले है कौन? इनके कस्टमर्स डायरेक्ट कस्टमर्स तो है नहीं. इनके कस्टमर्स है होलसेलर्स एंड सुपरमार्केट्स, राइट? कस्टमर्स का रिलेशन डायरेक्टली कंपटीशन या राइवल्स के साथ होता है, राइट? सो अगर राइवलरी हाई है, दैट मीन्स बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी हाई है, बिकॉज बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स भी कॉम्पिटिंग प्राइजेस पे कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स देंगे होलसेलर्स एंड सुपरमार्केट्स को, राइट? सो इसके वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी हाई है. थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट. न्यू एंट्रेंट, कैपिटल ज्यादा चाहिए, एज आई सेड. फूड की बात कर रहे हैं, राइट? फिश फूड, ब्रांडेड से कॉन्फिडेंस आता है, राइट? तो अगर कोई कंपनी है जो मार्केट में काफी साल से है, तो आई वुड रादर परचेज फूड फ्रॉम देम, राइट? अभी भी अगर हम हमारे पेरेंट्स की बात करें, राइट, तो उनको एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही चीज चाहिए होता है, राइट? सो वैसे ही जब हम फूड की बात करते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट टेस्ट, इट्स ऑल अबाउट समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड, दैट हैज बीन एक्सेप्टेड, राइट? सो न्यू एंट्रेंट को एक तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, दूसरा न्यू एंट्रेंट को एक्सेप्टेंस लेने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, राइट? इसलिए न्यू एंट्रेंट के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शंस नहीं है. सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे थे, राइट? होम कुक फूड फर्स्ट, राइट? गो टू अ रेस्टोरेंट सेकेंड, राइट? इलाइट एंड वैल्यू ब्रांड, राइट? सो फिशनेट जो भी प्रोवाइड करता है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है. तो अगर फिशनेट वो नहीं कर पाता है, तो सब्स्टिट्यूट का भी पावर हाई रह जाता है, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Assess the implication for fishnet for the strategic drift identified by the consultant. Before finishing the previous question, report है तो conclusion लिखना पड़ेगा. Overall, industry में because high competition है, high bargaining power of supplier है, high bargaining power of consumers है, threat to new entrant है, threat of entering the market है, right? Substitutes ज़्यादा है. That's why it is a less attractive industry, right? Strategic drift मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट होता क्या है, राइट? यहाँ पे कंपनी का मिशन क्या था? इनोवेशन. क्या कंपनी वो कर रही है? नो, राइट? तो जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो फॉलो कर नहीं रही है, राइट? दे आर फोकसिंग मोर ऑन रूटीन वर्क. So the strategic drift is definitely there, right? Once company realizes that it has moved from its strategy, company will refocus and refocus on innovations.
right? Advises the directors of a suitable intrapreneurship policy and procedure to exploit the strategic opportunities. Now, intrapreneurship होता क्या है, right? First of all, intrapreneurship. Oh, right? So इस स्टेज पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फंडिंग करती है टू इनोवेट, टू क्रिएट something for the company, right? Now this thing is not, it's just like you must have seen Shark Tank. Shark Tank में क्या होता है, आप अपना प्रपोजल लाओ, राइट, एंड फिर आपको अप्रूवल मिले तो फंडिंग मिलती है। लेकिन यहाँ पे जब कंपनी इन हाउस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करती है तो जो इनोवेशन है वो क्रिएट करने के लिए भी फंड्स कंपनी ही देगी, right? And here the question is advise the director of suitable entrepreneurship policy. The company needs to bring a policy to start using the entrepreneurship. And the procedure might be that the employees produce a business case, right? First of all, on paper, right? Then it will be reviewed for innovation. Then prototypes can be made, like small samples. Once approved, company can incorporate it in the business, right? So company just by saying कि इंट्राप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करेगी would not be enough. उनको एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि उसमें क्या इन्वॉल्व है, क्या कॉस्टिंग है. First take it on the blueprint, once approved then spend on it, right? So this is what you can write for 10 marks, and of course explain each of the points. Task 2. As a result of the consultant's report, the engineering director of Fishnet has asked to provide a briefing paper to the CEO in advance for the next board meeting. The paper was to assess whether Fishnet needed a formal new product development strategy, the NPD, and if so, what such a strategy might cost. Having received the briefing paper from the ED, the CEO has asked you to carry out a more thorough assessment of the proposal. The CEO is particularly concerned that the new strategy might have to be sold to stakeholders, as he is concerned that some of the stakeholders may not support the strategy without some persuasions. You've been asked to prepare a report, again a report, तो report format में डालना है. Analyze the stakeholders and new product development strategy using an appropriate model. मॉडल नहीं लिखा होता तो भी मैं स्टेक होल्डर पे मॉडल तो जरूर बताती हूँ, राइट? कीवर्ड्स, स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर पे मुझे एक ही मॉडल याद है और मैंने एक ही मॉडल सिखाया था, उसको बोलते हैं पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. अदर टर्म में बोलते हैं मेंडलोज मैट्रिक्स, राइट? इफ यू हैव अटेंडेड माय क्लासेस लक्ष्या पे तो आपको मालूम है कि कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको रिलेट करने के लिए, राइट? सो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ. पावर इंटरेस्ट मेंडलोज मैट्रिक्स 12 मार्क का है, सही है, राइट? इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स. कौन है स्टेक होल्डर इनके? बीओडी, सीईओ, मतलब द टॉप लेवल मैनेजमेंट. और कौन है इनका? शेयर होल्डर्स. और कौन है? सप्लायर्स, एम्प्लॉयज,
और कौन है? कस्टमर्स, राइट? सो हमारे पास 5 स्टेक होल्डर है जो मैं आई कैन फील कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपना मेंडलोस मैट्रिक्स बनाती हूँ, राइट? सो हाई, लो एंड सॉरी, आई जस्ट पुट एज लो हाई एंड लो हाई, राइट? यहाँ पे हो गया पावर, यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, कीप सेटिस्फाइड, लो इंटरेस्ट, लो पावर, कीप इन्फॉर्म्ड, sorry, minimum efforts. High interest, high power, keep layer. Low power, high interest, keep informed. Right? So मैं क्या करती हूँ, पहले मैं रफ में अपना एक मॉडल बना देती हूँ, राइट? अब इनको इसमें पुट अप करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो डेफिनेटली हाई एंड हाई होगा, सो मैं इनको कीप लेयर्स में डालती हूँ। शेयर होल्डर्स है तो शेयर होल्डर्स इंडिविजुअली तो कुछ कर नहीं सकते, राइट? सो और इनका इंटरेस्ट कंपनी में उतना होता है जितना उनका पैसा लगा हुआ है, राइट? सो इनका इंटरेस्ट समवेयर डाउन द कॉर्नर माइट बी हाई, राइट? बट their power in the company is low, but this can shift also, huh? Their interest in the company might be low and the power in the company can be high, which can be keep satisfied. So when we talk about individual shareholders, एक shareholder की अगर हम बात करो तो उसको keep informed में डाल सकते हो, राइट? लेकिन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स की बात करो या फिर एक शेयर होल्डर जिसने बहुत जगह पे अपना पैसा रोका हुआ है, तो कीप सेटिस्फाइड में भी आ सकता है। इन एग्जाम आप क्या करोगे? आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो, राइट? एज फार एज यू आर जस्टिफाइंग इट, इट इज अ करेक्ट आंसर। सप्लायर, सप्लायर को इंटरेस्ट कम होता है, राइट? उसको उसका पैसा मिल गया, हो गया, कीप इन्फॉर्म्ड। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज आर योर पीपल जिनका इंटरेस्ट बहुत हाई है ऑब्वियसली, लेकिन पावर कम है, सो इनका भी एक कीप इन्फॉर्म्ड आता है। एंड कस्टमर्स का इंटरेस्ट भी कम है एंड पावर भी कम है, so we can do a minimum efforts, right? So अगर मॉडल के साथ बोला है तो you can find out 5 and you can justify them by using 2 in the shareholder, so you think कि भाई मैंने दो दो पॉइंट का लिख दिया है। Assess the suitability, feasibility, and acceptability of the new product development strategy. You should refer to your stakeholders' analysis where appropriate. This information should be provided as a series of slides with accompanying notes for the CEO to present to the next board meeting. एग्जाम में आपको स्लाइड सेपरेटली दी गई होगी। एसीसीए के सीबीई प्लेटफॉर्म पे कोई भी स्पेसिफिक पेपर उठा के देख लीजिए, अगर प्रेजेंटेशंस वाला है तो प्रेजेंटेशन का सेपरेट आंसरिंग एरिया होता है, ओके? और इनफैक्ट अब तो ईच टास्क का भी सेपरेट आंसरिंग एरिया आपको मिलेगा, राइट? तो आपको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में उसको बनाना है। क्वेश्चन हियर इज फोकसिंग अबाउट एसएएफ, suitability, feasibility, and acceptability, right? एसएएफ मॉडल है ये। So let's start writing the slides. You should refer to stakeholders analysis, which is the first part, where appropriate, and this information should be provided as a series of slides with the accompanying notes for the CEO to present in the next board meeting. 10 marks का क्वेश्चन, तो दो दो मार्क का एक स्लाइड, क्योंकि स्लाइड के बाद आपको नोट्स या एक्सप्लेनेशन भी देने हैं, राइट? सो दैट शुड बी इनफ। सो व्हाट कैन आई राइट इन स्लाइड 1? आई कैन टॉक अबाउट द एनपीडी, बिकॉज एनपीडी की ही बात हो रही है, एनपीडी की स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, राइट? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। सो व्हाट कैन बी द फर्स्ट पॉइंट? द सीनियर फाइनेंस मैनेजर, मतलब मैं और मेरा रिव्यू, राइट? We are going to test the SAF model and the conclusion. So here the first slide should give an information कि ये presentation में आपको क्या देखने मिलेगा, क्या आप यहाँ पे find out करोगे। Slide 2,
Talks about obviously the first one, which is suitability, right? Speaks about test against position, test against environment, and test against mission. कंपनी अभी क्या पोजीशन पे है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है और कंपनी का मिशन क्या है, राइट? सो हमको पहले तो पता होना चाहिए कि हम सूटेबल है कि नहीं टू गेट इनटू अ एनपीडी स्ट्रेटेजी. The next one is talking about feasibility, or let's take acceptability because that is what I've picked up. Slide 3, acceptability, right? So stakeholders analysis conducted. All stakeholders should support proposal, right? So this is the acceptability part. Third, we can talk about the feasibility. How feasible is it to have the NPD? So we can talk about the existing skills and resources. We can talk about the time that the company has utilized or wasted earlier. And we can talk about the financial because if you see, जो funds दिखाए थे company ने वो भी काफी massive थे. You start with an expense of 1.5 million and after almost 6 years it doubles up, right? But that was also on a very mota kind of calculation, right? So once you get them, you need to explain them. And finally, the slide number 5, where we are going to end it up, right? Like a conclusion. So slide 1 is the introduction, slide 5 is the conclusion, right? Suitable तो है, right? Still make it. Feasible शायद नहीं है, कंपनी के पास शायद इतना पैसा नहीं है. Just a second, let me just put these things here. Slide 5, feasible. Suitable, yes. Feasible, कंपनी के पास शायद इतने skills नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर we can just say maybe. And acceptance, definitely. If they bring out something which which the people require, definitely they are going to get the output out of it. Right? So this is how you handle the presentation. But obviously, this is just the presentation slides that are given. You are expected to write after this, which is in a section of notes. Assuming that Fishnet decides to proceed with the NPD, advise the CEO how Fishnet should communicate with each of the main stakeholders in the process. You should refer to your stakeholder analysis where appropriate. Again, we have categorized people here. So we will be talking about the key players because they are the CEOs and all, right? And we can say that the board will receive info on time to time basis because obviously they are the ones who have got the highest power and the highest interest. Second is our keep satisfied. वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग थे, right? We can send briefing notes to shareholders because each shareholder's interference on step by step or detailed program would be quite difficult, right? And keep informed में हमारे पास काफी लोग थे, suppliers थे, staff था, right? So इनको we can just drop an email saying that this is what the company is doing and this is how the company will be progressing, right? So if you notice these three questions are interrelated. Question में आपको तीनों चीज का relation दिखाया गया है, okay? Because you start with Menlo's and that is where everything will be backed with it. Task 3. The IT director has asked you to assist him in getting final board approval for a capital investment. He plans to upgrade Fishnet's customer relationship management system with the full support of finance.
marketing director. A member of the finance function has already produced an NPV analysis, which shows that the proposal adds shareholders' value when discounted at Fishnet's WACC. However, a concern was expressed within the finance function that a higher discount rate should be used. CEO is apparently concerned that the risk inherent in some of the proposed system components are not well understood. The chair of the Risk Management Committee, a non executive director, has asked the CEO's concern be addressed before the proposal comes back to the board for the final approval. When we saw the last exhibit, we saw that CRM was something जो company बहुत ज़्यादा comfortable नहीं थी and वो big data and cloud system की बातें कर रही थी. तो ये क्वेश्चन में भी हमारे पास वही क्वेश्चंस, वही इंफॉर्मेशन या वही चीज एक्सप्लॉइट करने का चांस है. You have been asked to produce an email to the chair of the risk management committee, which, in the context of the proposed change of CRM system, evaluates the benefits and risk of big data. Right? So हमको एक straightforward benefits and risk देने हैं. 10 marks. यहाँ benefits लिख दूँ. यहाँ risk लिख देते हैं. Let's start with the benefits. Innovation, definitely. Time reduction. Systematic segregation. I'm just taking the three V's and putting them here. Like, it becomes easier. Three V's ko yaad rakhe if you put the answer. Competitive advantage, definitely. Right? All these things are benefits. 10 marks का question है, right? So I think that should be enough. जब हम risk की बात करें, तो सबसे बड़ा risk is money, staff training, resistance to change, right? Money is cost, correct? Data security and data protection. राइट, बिकॉज अगर आप बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रख रहे हो, सिक्योरिटी एंड डेटा में फाइनली इवेंचुअली आप ज्यादा पे आउट करोगे, राइट? सो यू कैन राइट देम एज योर रिस्क. Advise on the risk of using cloud as an alternative to owned hardware and software technology in the proposed system. अब यहाँ पे हमको सिर्फ रिस्क बताने हैं, राइट? कंपनी बोल रही थी कि क्लाउड सर्विस डेफिनेटली कंपनी के पास इन हाउस है नहीं, राइट? सो ये एक थर्ड पार्टी का रिस्क हो गया, राइट? सो अगर हम क्लाउड सर्विस की बात करें तो कौन से रिस्क है? एक तो इंटीग्रिटी, कि जो थर्ड पार्टी हमारे इंफॉर्मेशन को रख रही है, क्या वो उसको सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड रख रही है, क्या उसको किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर रही है. सेकेंड, सिक्योरिटी इटसेल्फ, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए, इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए. थर्ड, अनऑथराइज्ड एक्सेस. क्लाउड पे चीजें हैं तो हैकिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. क्लाउड वेंडर might not be equipped because in the third exhibit we realized that company has got major information that it needs to keep, right? So there are chances कि cloud vendor के पास शायद इतना storage ना हो, and because you are giving it to the third party, obviously it is going to lead to loss of control and management. 10 marks as far as you can elaborate them, well and good. Concludes whether the finance function was right to suggest that a higher discount rate should be given in the NPV calculation. Conclude whether the finance function was right to suggest that the higher discount rate should be calculated in the NPV. Now यहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी? NPV यूज कर रही थी and it was using at a certain rate, right? Business risk is company में inherent है because the CRM project is clearly something which is going to be the core thing for the business.
कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या प्रेफरेंसेस, अगर कंपनी को वो पता चले तो डेफिनेटली वो उस पे इम्प्रोवाइज कर सके, एंड उसके लिए ही ये बिग डेटा या क्लाउड सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे. So the proposal to use cloud service to add big data is something which increases the project risk. क्योंकि obviously हमने risk अभी इसके discuss करे वो security, third party, loss of control, expensive, etc. Right? If the investment is relatively small, it could be argued to use the current VAT, but because we are using the cloud, we know that it's not going to be cheaper affair for the company, right? So the investment here is going to be more. It is substantial, right? So it is more appropriate for Fishnet to use a risk-adjusted WACC or even a risk-appropriate marginal cost of capital. The project might not achieve a positive NPV to add value to the shareholders at the existing calculation values, right? So NPV directly related है to the cost of क्लाउड सर्विस. कंपनी को पता है कि क्लाउड सर्विस होने वाला है एक्सपेंसिव, राइट? सो एनपीवी का परसेंटेज अगर बढ़ा दो तो शायद वो उसको हेल्प नहीं करेगा, राइट? कंपनी कैन यूज अ रिस्क एडजस्टेड वैक, राइट, टू अश्योर दैट वो एनपीवी को सबसाइड करे या फिर शेयर होल्डर्स को वैल्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एस्टैब्लिश करके दिखाएं, right? Because NPV by itself might show a loss, might show a negative NPV, which is not something that the organization is looking forward to, right? All of this relates to again the cost of the cloud service, right? If there was some other service, for example, which was cheaper, then maybe the existing way of calculating would make sense. But since the investment is high, it has got an inherent risk, it has got a project risk also, there are chances that the value that is added might not be visible to the shareholders, right? So it's just a 2 marks question, like a little discussion is expected out of it. That is all how you can handle a 10 marks, sorry, a 100 marks question. Obviously, see, when you are answering a 100 mark question, I can help you with the pointers. लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा आंसर टाइप करके दे दूँ तो it's not going to help you anywhere, right? Answers लिखे होते हैं, right? I would make sure that ये आंसर YouTube चैनल पे भी अपलोड हो जाए ताकि आप उसका आंसर टाइप्ड आंसर देख सको. लेकिन मोर ओवर अंडरस्टैंडिंग और जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ अप्रोच है उस पे ज़्यादा फोकस करना है एग्जाम में, right? With this, we end the YouTube revision for SBL, ACCA's SBL, and definitely it is powered by Lakshya, IIC Lakshya. अगर आप एक स्टूडेंट है जो मेरे साथ लक्ष्य में है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन का आंसर लिखें, मुझे दें, मैं रिव्यू करूंगी एंड रिवर्ट करूंगी, राइट? द सपोर्ट टीम विल ऑल्सो हेल्प अस टू डू द सेम थिंग. And if आप मेरे student नहीं है, then also it's not a problem. You can always write the answer and try to see how much it is similar to the actual answer. Don't try to imitate the answer. Answers को copy करके उसको replicate करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. That is not going to give you any insight. Okay? उससे better है कि आप question समझो. सबसे important है scenario समझो. उसके बाद है question समझो. And finally आप focus करो कि आपको क्या लिखना है. After looking at the marks. So जब भी हम एग्जाम का क्वेश्चन लिखते हैं, राइट, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, लेट मी जस्ट टेक अ फ्रेश, नहीं है, राइट. सो फाइनली जब भी हम एक एग्जाम का क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम SBL के 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, तो बिकॉज हमारे पास प्री सीन मटेरियल है, ठीक है, तो हम पहले से ही उसको अच्छे से रेडी करके जाएंगे, उसके पॉइंटर्स, उसके नोट्स हम सारा बना देंगे, ठीक है. उसके बाद जब हम एग्जाम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हम अब क्वेश्चन देखेंगे, एग्जिबिट्स के साथ रिलेट करेंगे. सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में, टास्क में इंडिविजुअल क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है वो देखेंगे, उसके पॉइंटर्स मे बी इन नोट्स या फिर साइड पे बना देंगे, एंड फाइनली फिर हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. आई नो दिस साउंड्स लिटिल टीडियस कि इतना सारा मैं इतने छोटे टाइम में, इतने कम टाइम में कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, राइट? लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
अगर आप मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप डेफिनेटली ये चीज अचीव करोगे एट एन एवरेज ऑफ समवेयर अराउंड 15 मिनट्स, राइट। मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ये रूल पे वर्क करना है, राइट। एसीसी आपको क्या बोलता है, 1.8 मिनट्स पर मार्क। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, 1.5 मिनट्स पर मार्क, राइट। जो आप यहाँ 30 मिनट्स सेव कर रहे हो ना, ये 30 मिनट्स आपको एंजाइटी को सेटल डाउन करने में लगेंगे, क्वेश्चन का जो मैं आपको स्टेप वाइज मूवमेंट है उसको अचीव करने में लगेंगे, राइट। सो आई एम श्योर अगर ये चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली योर पासिंग चांसेस फॉर द ACCA SBL पेपर इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। So, on that note, I would like to end the class. Thank you so much for being part of it. I hope this has brought you a lot of value addition. I hope this helps you to increase your passing chances and obviously get a rank if possible. And I hope that you all do it pretty well after the pre-seed material comes. So, good luck and take care.